Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to the YouTube channel Zero to Infinity Seek the Maths with Arslan. So today's topic is linear inequalities. Without wasting any time, let's move on to the topic. So the topic linear inequalities is a bit of similar with the topic linear equalities. So let me start from the things that what is linear inequalities, what is inequality and all these things. So let's start formally. So we have linear inequality. So before this, let me tell you one thing. In two numbers, there are three possibilities. In two numbers, there are three possibilities. And you know what are the possibilities? Let me tell you. If we have a number A and a number B, so the first possibility is they could be equal to each other. For example, we have 4 and we have 2 plus 2. So they look like a different number, but they are equal to each other. The next is we have two numbers. Let's say again, they are A and B. So A could be greater than B. A could be greater than B. So for example, let's say we have 4 and minus 9. So always 4 is greater than minus 9. And we have A and B. The last thing is A could be less than B. Let's say we have 10 and 100. So obviously 10 is less than 100. तो तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या तो वो बराबर होंगे या कोई एक बड़ा होगा या दूसरा छोटा होगा. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है अब कि हमारे पास जो ये चीज है, दिस इज नॉन एज इक्वालिटी. इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वल है, इक्वालिटी है. एंड दे बोथ आर नॉन एज इन इक्वालिटी, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है, इन इक्वालिटी है इनको. तो दीज आर नॉन एज इन इक्वालिटीज. अच्छा, अब इनइक्वालिटीज में ना यहां तक बात खत्म नहीं होती है. वी हैव दैट कि इनइक्वालिटीज में पहली बात तो इसको पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज. सो इसको रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं. अब कैसे करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव 4 इज लेस देन 10. तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं, 4 इज लेस देन 10. सो 4 इज less than 10. Okay. Now the important factor which I have to discuss over here, और बहुत ही important है, और उसको मैं कलर भी अलग कर देता हूं ताकि आप लोगों को वो याद रहे. वो ये है कि हमारे पास ना इसकी भी आगे अलग अलग थोड़ी सी एक्सपेंशन आती है. वो कैसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड जब हम करते हैं तो ये हमारे पास जो शेप है इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, लेफ्ट टू राइट पढ़ना. ठीक है. इस शेप को हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन. ओके. उसके बाद हमारे पास अगर इस तरह का आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, ये भी एक शेप होती है, इसको बोलते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू. अब और का मतलब क्या है, या वो बराबर हो सकता है या वो छोटा हो सकता है. ठीक है. लेस देन और इक्वल्स टू. और फिर एक और शेप होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. ठीक है. अब ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है, हमारे पास ये शेप है. ओके. अब ये तो सारी बातें थी इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी में जो जो चीजें आपको नजर आएंगी वो इसी तरह की नजर आएंगी. ठीक है. अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके साथ खेलते कैसे हैं, उसके ऊपर काम कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन से शो होगा. तो क्वेश्चन शुरू करते हैं. हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क का. ये मोस्टली ओ लेवल्स में पूछा जाता है, प्री ओ लेवल्स में पूछा जाता है. इवन दे कुड बी आस्क्ड इन मैट्रिकुलेशन टू. सो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नजर आएगा सॉल्व कैसे करना है. सो क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन. दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये मैंने आपको सिखाना है कि नंबर लाइन पे कैसे करते हैं. तो बड़ा आसान सा काम है. क्वेश्चन पढ़े पहले. 7m-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 19. ठीक है. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 19. अब सबसे पहले जैसे कि नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करना है. कैसे होगा कि 7m इधर रहेगा, लेस देन और इक्वल्स टू 19, और 2 इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम +2. So we can write that 7m is greater than or equals to 21. अब m is greater than or equals to, अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, it will be divided by 27. So हम लिखेंगे जी m is greater than equals to 3, because 7 1s are 7, 7 3s are 21. ओके. तो हमारे पास ये शेप बनी
कि m is greater than or equals to 3 है। अब नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, उसके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी स्टोरी याद रखनी है। वो स्टोरी क्या याद रखनी है, वो देखें, बड़ी जरूरी बात है। अगर ये शेप हो, ठीक है, या उर्दू में लिख देता हूं, और आई शुड राइट इन इंग्लिश टू। सो this shape or this shape, for these shape we will use, this is for the number line, this is for the number line, only for the number line. Okay, so if we have these two shapes, so we will use unfilled circle, we use unfilled circle. अब कैसे यूज करेंगे मैं करके दिखाता हूं ना। और नंबर लाइन पे अगर we have this shape or this shape, then we use the filled circle, filled circle to show that कि हमारे पास ये कैसे चलेगा, कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इनइक्वालिटी। अब इसमें शेप हमारे पास ये है जिसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, फील्ड सर्कल करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे फील्ड सर्कल, वो एक छोटी सी स्टोरी है। लेट्स से आई हैव अ नंबर लाइन, टेढ़ी मेढ़ी है। सो 1 2 3, मेरे पास है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 से बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव 4, अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो 5। नंबर लाइन आपने स्केल से बना लेनी है। अब कहाँ रुकना है, 3 पे। यहां हमने 3 पे रुके बिकॉज m इज ग्रेटर देन 3, और उस सर्कल को फिल कर लिया। क्या कर लिया, उसको फिल कर लिया। ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू है, तो इसका मतलब है ये शामिल है पॉइंट। और ग्रेटर का मतलब है कि हमने पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जाना है, इससे बड़ी वैल्यूज पे जाना है। सो दिस इज हाउ कैन वी शो इन द नंबर लाइन, इस तरह हम लोग शो करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, आई होप सो समझ आएगी। वीडियो को पॉज कर लो, इसको आराम से नोट कर लो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सॉल्व द इनइक्वालिटी। ऐसी इनइक्वालिटीज भी आती हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, there we have to solve it just like what we done in equalities. So which one is the greater one, 5n or n? Definitely 5n is the greater one. So this n will move towards the 5n. It can be written as 5n minus n, and minus 8 will move over there with 7. So it will become 7 plus 8, and inequality will remain same. So 7 plus 8 will gives us 15 is less than 4n. So that will be like 15 upon 4 is less than n, or you can say that n is greater than 15 upon 4. So the same thing is here, which we have learned in the last question, how to solve this type of question. So here we have the question which can be solved in the linear inequalities. Now note it down too, then we'll move towards the next slide. So I hope so you have noted it down. Now, next we have a question. Let's solve the inequality with this type of question. Again, we're going to use the same trick that this one is 3m and this one is 8m. So how to solve this type of question, that who is the greater one? The 8m is the greater one. So what will happen, that 8m minus 3m, okay, and 12 will remain same over there, but 5 will come over here. So the 5 will become positive 5. Now this will become 17 is less than equals to 5m. And the answer will be 17 upon 5 is less than equals to, I'm so sorry, it will be m. Yeah. So this is the answer. Or we can say that m is greater than or equals to 17 over 5. So this is how we can solve the linear inequalities. Moving on towards the next question, we have this type of inequality where we're gonna multiply the things first, then we solve it. So what should we need to do? We need to first solve this by algebraic way. That 3 will be multiplied by x gives us 3x minus 3 2s are 6 and is less than 7x plus 7 2s are 14. Now again the same method which we had done in the last question. So it will be like minus 6 minus 14 is less than 7x minus 3x. Now the question is कि आपने 7 को इधर क्यों नहीं मूव किया? That will become a kind of negativity over here. So the easiest thing is कि आपने अपने वेरिएबल को कोशिश करनी है कि वो पॉजिटिव रहे. अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी. So the answer will become 4x. Now 4 will be divided by 20 will be divided by 4 because 4 is multiplying by x. So x will be can be written by this one. So 4 1s are 4, 4 5s are 20. So the answer will be minus 5 is less than x, or we can actually write it that x is greater than minus 5. Now if I say to draw this one on the number line, so what can we do that?
The center one will be 0, it will be 1, it will be 2, it will be 3, and again we have that -1, -2, -3, and -4, and have -5. So in this one we're going to use the unfilled circle, because it is a less than, so unfilled circle will be used. So where will be the unfilled circle? Here will be the unfilled circle, and x is greater than 5. That means we need the values which are greater than -5, and 5 is not included. The unfilled circle told us that 5 is not included. I hope this will be the best thing to do to complete the concept of inequality and the number line too. So moving on towards the next slide, we have find all the integers. This one is very important, very important for the O-level section and even for metric 2. So find out all the integers value of x that satisfy the inequality. This is inequality को satisfy करना है हमारे पास, वो तमाम तर values हमने निकालनी है. तो -6 is less than 3x is less than 6. Okay, this is the inequality. अब x के साथ देखिए 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. मुझे ना x को सेंटर में अकेला करना है, जुदा करना है, तनहा करना है, सब कुछ छीन लेना है इससे, फिर ये जुदाई वाले गाने गाए बैठ. नो वरीज. तो अब आपने करना क्या है कि इस 3 को यहां से हटाना है. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x. तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3, ऑपोजिट चलना है. ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3. सो -6/3. अच्छा, ये जो डिवीजन होगी दैट विल हैपन ऑल ओवर द इनइक्वालिटी, सबके साथ होगी. सो 3x/3 इज लेस देन 6/3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6. So -2 is less than equals to 3 1s are 3, 3 1s are 3. That will becomes x is less than again 2. So अब आपका ये inequality बता क्या रही है? What is actually this inequality telling to us? वो ये कह रही है कि देखें -2 शामिल है, x की वैल्यूज में -2 की इक्वालिटी लगी हुई शामिल है, लेकिन -2 से बड़ी बड़ी वैल्यूज लेनी है, x बड़ा है. सो -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, ठीक है, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा. यहां पे ये जो चीज है ये बताती है कि ये शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, ये हमें क्या बताता है, नॉट इंक्लूडेड, और ये बताता है दिस वन इज इंक्लूडेड. ठीक है, और जो इंक्लूडेड है उसको हमने लिखा, और जो इंक्लूडेड नहीं है वो हमने नहीं लिखा. सो दिस इज द आंसर कि ये हमारे पास वो वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वालिटी का पार्ट हो. आई होप सो कि अच्छे से समझ आई होगी. ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें पॉज करके, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज अगेन जस्ट काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन इन द previous slide. So that is 18 minus 2n. It's a bit of different kind of question. So 18 minus 2n is less than 6n is less than or equals to 30 plus n. Okay, so now what we need to do, we need to simplify the n. लेकिन इसमें ना दोनों तरफ n included है. अब मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. कैसे? I can do this way that 18 minus 2n is less than 6n, और फिर उसके बाद 6n is less than equals to 30 plus n. और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए तो आप पिछला क्वेश्चन भी इसके थ्रू कर सकते हैं. Now, how can we solve this one? Again, we need the n. तो क्या होगा, बड़ा आसान सा काम है, that 6n plus 2n. This will become the 8n and less than 18. तो अब हमने 18 को डिवाइड करना है किस पे, 8 पे. Now, the simplification will done over here and the answer will be 9/4 on the table of 2. Okay, so in this side we have 6n and the n will come over here and it will be minus n less than equals to 30. So we got 5n is less than equals to again 30, and n will be less than or equals to 30/5. So the answer will be 6. So n is less than equals to 6. Now we need to join it them again. जिस तरह वो पहले थे उसी शेप में उनको वापस भी लाना है. So n will be written in the center. The less than part will written over here 9/4, and then this can be written over here. अब 9/4 जो है अगर मैं उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करूं तो वो मेरे पास बनता है 2.5. So 2.5 is not included. ठीक है, 2.5 से अगली हर वैल्यू आपकी इंक्लूडेड है. ठीक है, लेकिन आपने इंटीजर्स बताने हैं. क्या बताने हैं? इंटीजर्स बताने हैं. आई होप कि मैं इसको ठीक कर गया हूं. सो हमारे पास इसके इंटीजर्स बताने हैं. दिस विल बी लाइक 4 1s are 4, 4 2s are 8. देन विल बी देयर, अगर आप इसकी डिवीजन करते हैं 9 की 4 पे
So 4 twos are 8. Then we have 1.10. Again, 4 twos are 8. Then we have 2. Then 2.25. I mean, if I put 0 over here, so the answer will be 2.25. अब मुझे 2.25 से अगले नंबर लेने हैं 6 तक. So the number will be, जो भी numbers होंगे वो 2.25 से ऊपर जाना है. So the starting will be 3, क्योंकि integers बोला उसने बोला integers. Integers जो है हमारे पास negative and positive दोनों होते हैं. But we have only positives over here. So 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, and this inequality shows that 6 भी शामिल है. So these are the integers. ये वो इंटीजर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी का पार्ट है. So these are the very prestigious kind of questions from the O level stream. अब ये O levels के लिए भी है, ये metric के लिए भी है, ये middle के लिए भी है, ये 7 8 सब के लिए है. So I hope this video will find you a good conceptual kind of thing. आपके concept clear होंगे, हो चुके होंगे, इन तमाम को अपने नोट भी कर लिया होगा by pausing them. So आपने करना क्या है? You have to give me a feedback through your comments. आपने comment करना है. If you want to learn more kind of topics, even from the university, from A levels, O levels, I'm here for you. So do like and subscribe this channel. Share this channel with your friends, with your family, with your relatives, so they can get a lot of opportunities to get good score in maths. And if you want to find any difficulty in the questions or anything, so you can text me in the comment box. I'll be there for you. Thank you so much. Allah Hafiz.